Hello everyone. This is Pinky Yadav as an English teacher from Surya School Mahendragarh. And students, in last video I taught you voice, and today also we will discuss this topic. We will continue this topic. So I was telling you that for active or passive voice, what is the structure for active or passive? This is the structure for active and this is structure for passive. This structure will be changed into passive when we have present indefinite tense, right? And as you know, there are three types of tense. I have already told you कि there are three types of tenses: present, past and future. And all three tenses, each of three tenses are classified into four categories: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Perfect continuous. And past indefinite, past continuous, past perfect continuous, future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Like this there are total 12 forms of tense. 12 forms of tense, right? But in voice we will discuss, or we will change only 8 forms of tense will be changed into passive. Only 8 forms of tense will be changed into passive. Present indefinite will be changed, continuous also will be changed, perfect also will be changed, perfect continuous will not be changed, past indefinite will be changed, continuous will be changed, perfect will be changed, but perfect continuous will not be changed. Future indefinite will be changed, continuous will not be changed. It is changed and it is not changed. Like this only 8 forms of tenses, 8 forms. Only 8 forms: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. These 8 forms can be changed into passive. Rest 4 forms cannot be changed into passive, right? And then now we will discuss which type of sentences we will discuss in passive, in voice. Affirmative, assertive sentence. As you know, there are 5 types of sentences. First, assertive, interrogative, exclamatory, imperative and optative. But now we will discuss assertive की बात करो. There are 2 types of assertive sentence. Affirmative. Affirmative means positive statement. Negative, and then interrogative also. Interrogates. These 3 types of sentences we will discuss in each and every tense, right? Look, first of all, according to tense we will discuss present indefinite की बात करेंगे हम. Present indefinite. Example, affirmative: he writes a letter. He writes a letter. Subject, verb and object. Subject, verb and object. हमारे पास तीनों पार्ट्स मिल गए. देन वी विल चेंज. सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट. वर्ब की यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड हो रखा है, बट वी विल यूज वी थर्ड, राइट? सो ऑब्जेक्ट को बिगिनिंग में ले आओ. क्या बिगिनिंग में? ए लेटर. A letter. According to subject is singular, then verb also will be singular. Subject यहाँ पर singular है. is, am, are में से हम क्या लेंगे? Subject singular है तो is. A letter is. V थर्ड यूज करो. देखो ये स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी मिला है. सब्जेक्ट मिल गया हमें V1 के साथ, S हमें ऐड होकर मिला, राइट? उसके बाद ऑब्जेक्ट मिला. We will change this structure into in this structure. So a letter is, then V third. Write, third form of write, written, and then object, agent, by, and then subject क्या है? He. And what is the objective case of he? Him, right? If यहाँ पर he की प्लेस पर she होता तो यहाँ पर हम her यूज करते, because it is pronoun table and you must have read this pronoun table. You must have learned this pronoun table when I taught you tense. हमने tense पढ़ा, then we discussed about pronoun table also. So she is changed into her, he is changed into her, and they is changed into them.
I is changed into me, and we is changed into us. So like this, here it is nominative case, and here we have to use objective case. That's why I have changed he into him. Clear? It is affirmative type. It is affirmative. Now we will discuss negative. Negative. She does not play games. She does not play games. She subject, helping verb, not main verb and object. Right? ऑब्जेक्ट को बिगिनिंग में लाएंगे. गेम्स. गेम्स यहाँ पर प्लूरल है. यहाँ पर सी सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने डज यूज किया. बट यहाँ पर क्या है? गेम्स प्लूरल है. प्लूरल है तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V1 सॉरी, लिसन टू मी. फर्स्ट लेट मी गिव द स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव. नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या मिलेगा हमें? सब्जेक्ट डू और डज प्लस नोट एंड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर ऑलरेडी मिलेगा हमें. सब्जेक्ट डज नोट V1 ऑब्जेक्ट राइट. दिस स्ट्रक्चर विल बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर पैसिव वॉइस? सब्जेक्ट प्लस डूडल्स की प्लेस पर प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर प्लस नोट प्लस. देखो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी हैड यूज्ड, अपनी तरफ से हमने इज एम आर यूज किया. बट यहाँ पर हमें ऑलरेडी देखो क्या मिल रहा है? डूडल्स मिला. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें यहाँ निगेटिव है. निगेटिव के लिए यहाँ पर डूडल्स के साथ नोट इज ऑलवेज यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब्स. यस, इंडिपेंडेंटली कभी यूज नहीं होता है नोट. इट इज ऑलवेज यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब्स. सो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वी थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. राइट? we have to change this sentence according to this structure. Games according to subject plural तो verb भी plural. Games are not played by, games are not played by, she is changed into objective case her. Right? It is negative. And then interrogative. What is the structure for interrogative? स्ट्रक्चर फॉर इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में हम डूडल्स को बिगिनिंग में ले आएंगे. डू प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. वी विल फाइंड दिस स्ट्रक्चर इन नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क. एंड वी विल हैव टू चेंज इट इनटू डूडल्स इज चेंज इनटू इज एम आर. इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. टेंस इज नेवर चेंज इन वॉइस. टेंस इज नेवर चेंज्ड. टेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज इन पैसिव वॉइस, बट only form of the verb is changed. Tense is never changed in passive voice. So now we have to follow this structure. We will find this and we have to change into this. Look, do you read this book? Do you read this book? Do helping verb. मिल गई. Subject you. V1 read and object this book. Question mark. How can we change? We will change into according to this structure. Beginning में क्या आएंगे? This book. This book. But remember, type of sentence cannot be changed. यहाँ पर हमारे पास affirmative होता है तो यहाँ पर भी affirmative. Negative है तो negative. Interrogative है तो interrogative. देखो question mark का है. So यहाँ पर भी हमें interrogative रखना है. Interrogative sentence can be started with either helping verb or WH family. Either helping verb से use होगा या फिर WH family word से use होगा. Right? So यहाँ पर do की place पर हम according to this new subject क्या use कर लेंगे? Is. Because it is singular. Is this book. थर्ड फॉर्म इज. देखो हमारे यहाँ से इज ले लिया हमने. इज आ गया एंड देन सब्जेक्ट आ गया एंड देन वी थर्ड. रीड की थर्ड फॉर्म स्पेलिंग will remain same or will be same, but only pronunciation will be changed. Read, read,
read. Spelling will be same. And pronunciation read. Is this book read? And then by. And then object. Object you. You का objective case क्या होगा? You is changed into you. Question mark. We have followed this structure in this. So thus these are the example. Today I have taught you present indefinite, affirmative, negative and interrogative. Right? That's all for today.